everyone, I am Arima Khanam and welcome back to Balajee online classes. I am once again here to illustrate lesson number 12, that is Save the Children. Students, have you ever seen or encountered small kids or children working in a factory, or when you pass by a construction site, have you ever seen small kids carrying heavy material on their head and carrying bricks on their heads and working in tea stalls? कभी आपने सोचा है कि अगर आपके साथ ऐसा हो या आपको कोई ऐसी जगह पर काम करना पड़े, आप हैवी मटेरियल कैरी करते हैं अपने हेड पे और काम करते हैं, या कोई टी स्टॉल पर बर्तन धोते हुए दिखाई देते हैं जैसे बच्चे, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा फील होगा? ये जो स्टोरी है ये उन्हीं बच्चों की कहानी है जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, जो अबैंडन्ड हैं, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, दे आर डेड and they are all left alone, so they need to work somewhere or the other to earn their livelihood. तो अगर आपके साथ होता है तो आपको कैसा फील होगा? So let's read the story. This is a story of a boy whose name was शांतु. तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में उसके बारे में क्या बताया गया है और उन सारे बच्चों के बारे में क्या बताया गया है कि वो बच्चे कैसे काम करते हैं और अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं. Jay was traveling to Mumbai on a train with his family to spend his summer holidays there. He was very excited about it. He made lots of plans of what he was going to do in his break. He was dreaming of sleeping and waking up late. He thought about the good treat that his grandmother was going to prepare for him. So Jay, as you can see in the picture, who is sitting on the berth, that is Jay, and he is making plans ahead as his summer holidays has started. So he is traveling to Mumbai to his grandmother's place, and he has planned that he will wake up late and he'll eat a lot of things. His grandmother will prepare many things for him and he'll have a very good holidays. He'll spend nice days in his grandmother's house. At night, when his parents were fast asleep on their berth, he heard a whisper near his lower berth. Jay flashed his small torch to see what was happening. He suddenly saw a little boy trying to sleep on the floor in a small space between two berths. The boy looked scared and hungry. Jay offered him a biscuit and they started talking. तो जब जय के पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो भी लेट जाता है अपनी बर्थ पे एंड ही वाज अबाउट टू स्लीप. तभी उसको कुछ विस्पर की साउंड आती है कि कोई बोल रहा है, और तभी जब वो अपनी टॉर्च खोलता है और देखता है कि वहां पर एक लड़का है एंड ही इज ट्राइंग टू स्लीप ऑन द प्लेस, द स्पेस दैट इज बिटवीन द टू बर्ड्स. तो वो वहां पर सोने की कोशिश कर रहा है. So what he saw that the boy was scared and he was hungry, so he gave him a packet of biscuit, and after having that biscuit they both started talking. Jay asked, "What is your name? How old are you? Why are you sleeping here on the floor?" The boy replied, "My name is Shantu. I am 10 years old. I want to go to Mumbai." So what happened? Jay asked him कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम शांतु है and I am 10 years old और मैं मुंबई जाना चाहता हूँ. जैसे कि उसने पूछा कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो. So he said I am also going to Mumbai. But where are your parents? Jay asked Jay. So Jay ने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो नहीं है तुम्हारे साथ? I don't know where they are. I don't remember them, replied Shantu. तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है. What do you mean? You don't remember your parents? asked Jay. Jay was perplexed. He was startled to hear that he didn't know about his parent. तो वो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है. My father left me on the train while I was sleeping many years back, came the reply. So Shantu replied कि मेरे पापा ने मुझे ट्रेन में छोड़ दिया था जब मैं सो रहा था, और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे पापा वहां नहीं है. बहुत पहले की बात है ये. तो I don't know about my parents. Shocked, Jay asked, "How could your father leave you behind?" तो जय जो है वो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं.
और वो तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? See, I came from a very small village. I don't even remember the name of it. I had 3 brothers and 2 sisters. We were very poor and did not have enough to eat. One day my father told me that we are going to the big city to find a job to bring back some money. I was very excited because that was my first train ride. When we left, my mother hugged me and was crying very hard. Then my father and I sat on a train. When I woke up in the morning, I was all alone. I could not find my brother. So he said, I belonged from a very small town and I don't know the name of my place even. We were 3 siblings. I had 2 brothers. That means they were 3 brothers and they had 2 sisters. They were very poor and they didn't have enough to eat even. So maybe their parents decided to leave them somewhere so that कोई ना कोई उन्हें ले लेगा, अडॉप्ट कर लेगा और वो लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. तो इसी तरह एक बार मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला कि चलो हम लोग आज बहुत बड़ी सिटी जाएंगे एंड देयर आई अर्न एंड हम लोग हैप्पीली वहां पर रहेंगे. तो शांतु वॉज वेरी एक्साइटेड. वो कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि आज मैं पहली बार ट्रेन में बैठूंगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट राइड. तो वो अपने फादर के साथ जाता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि he was all alone there. His father left him there in the train. Jay was taken aback. What? How could your father leave you like that? What did you do? तो जय बहुत ही सैड होता है उसके लिए और कहता है कि तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं. I got off the train and started looking for my father at the station. Night came and I still could not find him. Then I started crying and sat in corner to hide from the station master. I was hungry and lost. Next day I met another small boy who was selling paper soap on the railway platform, said Shantu. So Shantu said कि मैंने अपने पापा को, मतलब मैं ट्रेन से उतर जाता हूँ और मैंने अपने पापा को हर जगह ढूंढा. I searched him everywhere but I could not find him. फिर मैं रोने लगता हूँ and I was hiding from the station master कि उसको डर था कहीं वो उसे इंक्वायरी ना करे, इंटरोगेट ना करे कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें यहाँ कैसे कौन छोड़ गया. So he was hiding from him. So next day what he saw a boy, he met a boy of his age. उसी की एज का एक लड़का उसे मिलता है who was selling paper soap. With a little sign, Shantu continued, his name was Dhruv. He found me and took me to a place where there were many children like me. Some of them had got lost, some ran from their families and some were left behind by their families. तो कहता है कि वो लड़का Then I started crying and sat in corner to hide from the station master. I was hungry and lost. Next day I met another small boy who was selling paper soap on the railway platform, said Shantu. So Shantu said कि मैंने अपने पापा को, मतलब मैं ट्रेन से उतर जाता हूँ और मैंने अपने पापा को हर जगह ढूंढा. I searched him everywhere but I could not find him. फिर मैं रोने लगता हूँ and I was hiding from the station master कि उसको डर था कहीं वो उसे इंक्वायरी ना करे, इंटरोगेट ना करे कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें यहाँ कैसे कौन छोड़ गया. So he was hiding from him. So next day what he saw a boy, he met a boy of his age. उसी की एज का एक लड़का उसे मिलता है who was selling paper soap. With a little sign, Shantu continued, his name was Dhruv. He found me and took me to a place where there were many children like me. Some of them had got lost, some ran from their families and some were left behind by their families. तो कहता है कि वो लड़का जो मुझे मिलता है स्टेशन पे, जो पेपर सोप सेल कर रहा होता है, उसका नाम होता है ध्रुव. वो मुझे अपने साथ ले जाता है और वहां पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं. सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज होती हैं. मतलब कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, कुछ खो जाते हैं और कुछ they ran away from their families. Why would a family do that to their own child? Asked Jay. तो वो कहता है कि उनकी खुद की फैमिली उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है. There were many reasons. Many of us
come from villages. Some of us were sold by our own parents who didn't have the money to look after a big family. Some parents were tricked into it, replied Shantu. तो शांतु बताता है कि सबके साथ अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं. सम पेरेंट्स सेल देयर किड्स एंड चिल्ड्रन क्योंकि उनकी फैमिली काफी बड़ी होती है एंड दे कुड नॉट अपब्रिंग देम वेल, सो दे सेल देम टू अदर पीपल. और कुछ पेरेंट्स को तो ट्रिक करके उनके बच्चों को ले लिया जाता है कि हाँ उनके बच्चों को अच्छे से रखा जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आई हैव 8 friends to whom this happened. Their father or an aunt was contacted by someone they knew. This person promised their family a better life for the children. They promised to send the children to school, give them houses to live in. My friend were then taken away by that person. He later forced them to work in factories. 3 of them were simply sold to their employers. I have 2 other friends whose father just left them behind on the train, explained Shantu. So Shantu said, I have many friends. In fact, I have 12 friends I have 8 friends and उनकी भी लाइफ मेरी ही तरह है. किसी के पापा ने उनको बेच दिया, सेल कर दिया किसी के हाथ, और मतलब उन पेरेंट्स को ट्रिक किया जाता था कि हम आपके बच्चों को स्कूल भेजेंगे एंड दे विल हैव अ गुड लाइफ, पर ऐसा कुछ नहीं होता था. उनको फैक्ट्रीज भेजा जाता था, उनसे फोर्स करा के काम कराया जाता था. What happened to them? asked Jay. फिर वो पूछता है कि उन लोग के साथ अब क्या होता है. A lot of things, and often the things happen to us. Some of us are made to sing and dance on the streets. You can see children dancing in the middle of the road or selling things at a traffic signal. तो वो कहता है कि बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं. हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रोड पे, स्ट्रीट्स पे डांस करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, और कभी कभी हमें रोड पे चीजें सेल करनी पड़ती हैं. I will have to sell things at the traffic signals. At times, small children get lost. To survive, they join other children who work, continued Shantu. So Shantu कहता है कि जब हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम लोग दूसरे बच्चों को ज्वाइन कर लेते हैं जो अच्छे से रह रहे होते हैं. But what kind of work can small children do? asked a shocked Jay. तो Jay was very shocked, so he said कि किस तरह का काम इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं. With a sad smile, Shantu said, many things, but most of them are illegal. I started working in a factory where they made silk. We are made to work in a factory that make crackers at construction sites and sari factories. तो वो कहता है कि बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं. कभी कभी हम लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ क्रैकर्स बनते हैं, जहाँ साड़ीज बनती हैं, और हम लोग कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करते हैं. But isn't it dangerous? Inquired Jay. So Jay was popping up question one after the other. He was asking things to Shantu. तो वो कहता है कि क्या ये dangerous नहीं है? Yes, it's very dangerous. We are forced to work under horrible conditions. We work for long hours, sometimes for 16 hours a day. There are times when we are not given fresh food to eat. I hated being punished if I did something wrong or was not working fast. But we can't do anything. We are all alone in this world. So we stay forever. We get some money. Wherever we get some money, food and a place to stay. When things get bad, we run away to another place, explained Shantu. तो वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है. We are all alone. तो हमें जहाँ खुशी मिलती है हम काम करते हैं. एंड व्हेन वी आर पनिश्ड, वो कहता है कि जब मुझे कोई पनिश करता है कि मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे बहुत खराब लगता है. तो वी कांट हेल्प इट, वील हैव टू वर्क. अगर हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस जगह से तो समटाइम्स वी रन अवे एंड वी गो टू सम अदर प्लेस टू वर्क. आई हैव हर्ड दैट इट इज अगेंस्ट द लॉ टू मेक स्मॉल चिल्ड्रन वर्क, बट इट स्टिल हैपेंस. नोबडी केयर्स फॉर अस, ही फिनिश्ड. तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये ऐसा है कि स्मॉल चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू वर्क, जिसे हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं. इट इज नॉट अलाउड इन द कंट्री, इट इज फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड.
nobody cares for us, so हमारे लिए कोई केयर नहीं करता, and we'll have to work for our livelihood. What do you eat? Well, it depends on where I am. तो जय उससे पूछता है कि शांतु तुम क्या खाते हो, तो कहता है वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ रहता हूँ. I am sometimes I go hungry. If I am working at a tea stall, then the owner usually gives me leftovers. तो वो कहता है इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ पर हूँ. अगर मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ तो यूजुअली मुझे जो बचा हुआ खाना होता है मुझे वो मिलता है खाने को. समटाइम्स आई स्लीप हंग्री, कभी कभी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, सो आई हैव टू स्लीप हंग्री. समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर द फूड इन द गार्बेज, और कभी कभी मुझे गार्बेज से भी अपना खाना ढूंढ कर खाना पड़ता है. Don't you feel lonely? asked Jay. Again, he popped up another question. क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता है? With tears in his eyes, Shantu replied, very much. I miss my family. I hardly remember that. They looked like. तो कहता है मुझे बहुत बुरा लगता है. I feel really sad about myself. और मुझे बहुत lonely लगता है. मैं अपनी फैमिली को भी कभी कभी मिस करता हूँ, पर I don't know where they are. For a long time, I tried to find them, but I don't remember where they live. I miss my mother's hug. So he said कि मैं बहुत ढूंढता हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ है, कहाँ रहते हैं. अब तो मैं भूल भी चुका हूँ सबके चेहरे, पर मुझे अपनी मदर का हग बहुत याद आता है. I miss that a lot. What are you going to do in Mumbai? asked Jay curiously. फिर से क्वेश्चन करता है कि तुम मुंबई में क्या करोगे. Mumbai is a big city. When it gets cold in Delhi, some of us go to Mumbai. There are millions of children like us, you know. We'll find something to do. तो वो कहता है कि मुंबई जो है वो बहुत ही बड़ी सिटी है, और जब दिल्ली में बहुत ठंड होती है तो हम लोग कभी कभी मुंबई चले जाते हैं, और वहाँ हमारे जैसे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं. So we'll get something to do there, and we'll earn money and we'll live. Soon it was morning, and Jay's parents were going to wake up. Shantu could be caught for traveling without a ticket and thrown out of the train. So he had to leave. Before Shantu escaped, Jay gave him some food that he had in his bag and his favorite toy to remember him by. So what happened कि morning हो जाती है और जय के पेरेंट्स जो हैं वो उठने वाले होते हैं. They are about to wake up. तो शांतु सोचता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, otherwise I'll be caught by the station master or the ticket collector. तो इसलिए मुझे फेंक दिया जाएगा ट्रेन से. इससे बेटर कि मैं पहले ही से यहाँ से चला जाता हूँ. तो जय ने उसको बिस्किट दिया, उसको कुछ खाने को दिया और उसको अपना फेवरेट टॉय देता है ताकि शांतु उसे हमेशा याद रखे. In the few hours of the night, and the whole world of Jay had changed. He was suddenly aware of many things that he had taken for granted. He knew that wherever he saw another poor kid on the street, he would remember Shantu. तो ये पूरी रात और जो टाइम जय ने शांतु के साथ स्पेंड किया था, इस टाइम ने जय को बिल्कुल बदल के रख दिया. Jay was a changed person now. Whatever things he was taking for granted, जो उसको easily मिल जाती थी, whatever things were available very easily to him, वो उसकी कीमत जानता नहीं था, वो उसकी अहमियत नहीं जानता था. अब उसको हर चीज की वैल्यू पता चलती है और वो सोचता है कि आई एम लिविंग a very luxurious life, a happy life, and whenever he sees any boy working in some place or anywhere, he remembers Shantu. तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि that you should be thankful to God, grateful to him for all the things he has given, for all the luxuries he has given to us. We should be thankful for him for every single things he has granted. He has granted all our wishes and we are living a happy life. तो आप लोग भी उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, छोटी सी एज में स्ट्रगल करके दे अर्न मनी एंड दे अर्न देयर लाइवलीहुड एंड फिल देयर स्टमक. तो प्लीज आप लोगों को जो भी चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं, आपके पेरेंट्स आपकी विशेस पूरी करते हैं, तो उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरीथिंग. आप लोग की स्टडीज, आप लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उसको भी अपनी स्टडीज को खराब मत होने. थिंक अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग
the small kids who are working in factories, in construction sites, and they are leading a miserable life. तो उनके बारे में सोचिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करिए. अगर आपने आज प्रेजेंट में अच्छे से काम कर लिया, पढ़ लिया, तो आप फ्यूचर में अच्छी लाइफ जी सकते हैं. So I hope you understood the lesson, and whatever I have taught you about Shantu, you have learnt about Shantu, his life, and about Jay's life and how he was changed after meeting Shantu. So please download the exercises from School Mitra and do it nicely in your fair notebook and books, and read the lesson thoroughly and understand things. And if you have any doubt, you will ask me in the live session. So meanwhile, take care of yourself and wait for my next video. Bye bye.